Hello and welcome BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulshrestha and this is answer writing program series for Geography GS and this is the 18th question of the series. The question is South China Sea has assumed great geopolitical significance in the present context. Comment 2016. तो ये क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन आईआर दोनों में ही पूछा जा सकता है, रखा जा सकता है. So, in introduction portion, we will write about South China Sea present scenario. So, present scenario means आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कई तरीके से इंट्रोडक्शन को लिखा जा सकता है. साउथ चाइना सी और हम ये भी बता सकते हैं कि बेसिकली किसके बीच में ये टसल है. देन इन मेन बॉडी वी विल explain about the geopolitical significance of South China Sea, and then in conclusion we will sum up the answer, means we will provide summary in conclusion. So before moving on introduction और आंसर राइटिंग पार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं जिसमें मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट तीनों की सीरीज को लगातार चला रहा हूँ, आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नाउ कम टू इंट्रोडक्शन. सो दिस इज साउथ चाइना सी. देखिए मैप भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये है चाइना एंड दिस इज साउथ चाइना सी. और यहाँ पर जितने भी ये नेबर्स हैं, चाइना की प्रॉब्लम है कि वो जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ लड़ाई करता है. चाइना इंडिया से भी लड़ रहा है. ऑन द अदर हैंड इन साउथ चाइना सी वहां पर भी, चाहे वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, हर एक से वो लड़ रहा है. तो आप देखिए चाइनीज क्लेम, वियतनाम क्लेम, फिलीपींस क्लेम, अलग अलग लोगों ने अपने अपने क्लेम किए हुए, मलेशियन क्लेम. तो फाइट है किसकी टेरिटरी कितनी ज्यादा है. So South China Sea has indeed assumed great geopolitical significance due to its strategic location, economic potential and overlapping territorial claims by several countries. तो देखिए ओवरलैप हो रहा है ना, चाइनीज, वियतनाम, मलेशियन, फिलीपींस, ये क्या कर रहा है, ताइवान, ऐसे ही. इससे होगा क्या, आगे टेंशन ही बढ़ेंगी. सो साउथ चाइना सी में जब भी कभी कोई वियतनाम में हमारे शिप जाएंगे, इंडियन नेवी के शिप जाएंगे, तो चाइना को दिक्कत होगी. अमेरिकन नेवी के कोई शिप आएगा तो दिक्कत होगी. ठीक है, तो ये यहाँ पर चाइना की प्रॉब्लम है. नाउ कम टू द मेन पार्ट, की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस. फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन. क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, स्पेशली चाइना को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, और चाइना के कारण इसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगा हुआ है, जिस कारण से अमेरिका और बाकी के अदर कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं. सो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन. मेजर शिपिंग रूट इज पासिंग थ्रू इट. सो SCS मींस साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर with an estimated one-third of global shipping passing through its water. It serves as a critical route for international trade, connecting major economies in East Asia with the rest of the world. So major shipping route है. दूसरा है military significance. Control over South China Sea offers strategic military advantages. For instance, if it provides a platform for power projection, military operation in the broader Asia Pacific region. This has led to increased military presence and activities by both regional and extra regional powers such as the United States of America. तो मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. कुल मिला के ये दोनों फैक्टर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आते हैं. आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको आइलैंड्स दिखाई दे रहे होंगे, स्पार्टले आइलैंड्स, पार्शल आइलैंड्स. ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं. चाइना ने वहां पर उनको बनाया है और इसीलिए बनाया है ताकि आगे जाके वो उसकी टेरिटोरी को
क्लेम कर सके, वहां पे अपने नेवल बेस बना सके। सेकेंड फैक्टर इज इकोनॉमिक पोटेंशियल। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेस। South China Sea is believed to hold significant reserve of oil and natural gas, making it an attractive region for energy exploration and exploitation. Estimates suggest that the region may contain around 11 billion barrel of oil and 190 trillion cubic feet of नेचुरल गैस। तो देखिए हर जगह जो वॉर चल रहा है ना वर्ल्ड में, वो एनर्जी को लेकर है। अमेरिका गल्फ वॉर करता है या फिर कभी ईरान इराक में घुसता है, या फिर यूक्रेन वॉर होता है, हर जगह क्या है? सर्च ऑफ एनर्जी। एनर्जी चाहिए सबको, कोल रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व, क्योंकि आगे अगर बढ़ना है और इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी करनी है तो उसके लिए ये बेसिक चीज है, फ्यूल है। सेकेंड, फिशिंग ग्राउंड। South China Sea is also one of the world's richest fishing ground, providing livelihood for millions of people in surrounding countries. Overfishing and competition for these resources have led to tensions and conflicts among the littoral states or countries. So this is the second cause, economic potential. Third, territorial claims and disputes. Competing claims, several countries including China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei, Taiwan have overlapping territorial claims in South China Sea, as you have seen in the map. These claims are based on historical, legal, and geographical arguments, leading to complex and contentious disputes. Second, China's nine dash line. China is nine dash line means, आप देखिए दोबारा से मैप में चलते हैं। देखिए ये क्या है? नाइन डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये थोड़ा सा इसने और ज्यादा बढ़ा दिया है। सो नाइन डैश लाइन मीन्स वो उसने अपनी टेरिटरी बनाई है। चाइना asserts extensive claims over most of the South China Sea through its nine dash line, which covers about 90% of the sea. This claim has been rejected by International Tribunal in 2016 under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS law. But China has continued to assert its right and build artificial islands to reinforce its claim. चाइना किसी की सुनता नहीं है। चाइना अपने हिसाब से जो उसकी मर्जी आ जाए कल के लिए, वो पूरे इंडिया को भी अपना टेरिटरी बता सकता है। वो 10 कदम आगे बढ़ता है दूसरे की टेरिटरी में घुस के, फिर जब विरोध किया जाता है तो 2 कदम पीछे खींच लेता है, तो कुल मिला के 8 कदम की उसने डिस्टेंस तो तय कर ली ना। इसी तरीके से उसका अपना एरिया फैलाने का एक स्ट्रेटेजी है। सो टेरिटोरियल क्लेम एंड डिस्प्यूट, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेंशंस, यूएस चाइना राइवलरी। साउथ चाइना सी has become a focal point of US-China rivalry. The United States conduct freedom of navigation operation to challenge China's expensive claims and ensure open sea lanes, leading to confrontation with Chinese forces. तो टेंशन बहुत है यहाँ पर because of US-China rivalry. Second, ASEAN and multilateral diplomacy. Association of Southeast Asian nations, ASEAN countries, has been involved in effort to manage and resolve disputes through diplomatic means. However, the divergent interests of member states and China's influence have complicated these efforts. Third is legal and diplomatic efforts. Countries like Philippines have sought legal recourse through international tribunals, while others have engaged in bilateral and multilateral negotiations to resolve these disputes. Despite these efforts, the region remains a hot spot for geopolitical tensions. Okay, so these are 4 factors which contribute its importance, South China Sea importance. Now, if we talk about recent development, तो उसको भी हम यहाँ दे सकते हैं. First is militarization. There has been an increase in militarization of South China Sea, China constructing military facilities on artificial islands and reefs.
This has raised concern about the potential for conflicts and stability of the region. तो चाइना अपने आर्टिफिशियल आइलैंड पे मिलिट्री फैसिलिटीज इंस्टॉल कर रहा है, तो उसके कारण दिक्कत है, मिलिटराइजेशन हो रहा है. सेकंड, अलायंस एंड पार्टनरशिप. Countries like Philippines and Vietnam have sought closer ties with external powers like United States of America, Japan and India. इंडिया का वियतनाम से बहुत अच्छा टाइज है. वियतनाम ने बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेज किए हैं इंडिया से टू काउंटर बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस. These partnerships aim to enhance maritime security and uphold international law. So these are recent developments which you can mention in your answer within one or two line. और अगर आप सिर्फ पॉइंट्स को भी लिख देते हो, मिलिटराइजेशन, अलायंस एंड पार्टनरशिप, तो भी चलेगा. Now come to the conclusion part. South China Sea geopolitical significance is driven by its strategic location, economic resources, and complex web of territorial claims and international rivalries. The region remains a flashpoint for potential conflict, making it a critical area for international diplomacy and security efforts. Hence, this is the answer of the desired question. If you like our video, please like, share, and subscribe. Brainbridge UPSC. Thank you.